हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बुआ जी के यहाँ आया हूँ। तो आपको मालूम है मैंने एक फ़ैन का रिव्यू किया था, छोटे फ़ैन का। आप वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो आज मैं एक नए फ़ैन का नाम है बजाज स्पेक्ट्रम, इसका रिव्यू करूँगा। तो बजाज स्पेक्ट्रम फ़ैन देखिए, साइज़ करीब 1.5 फीट इसकी जो डायमीटर है। तो ये जो है इसमें फीचर्स नीचे 4 बटन दिए, 0 1 2 3। तो 4 स्पीड है इसकी। और पीछे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर एक बटन है, उससे हम इसको घूमना चाहे तो रोक सकते हैं। तो इस बेनिफिट अब आप देखेंगे, ऊपर पंखा चल रहा है ऊपर, पर वो पंखा जो है ना उतनी हवा नहीं देता जितने की टेबल फ़ैन देते हैं। अब मैं ये बड़े हॉल में बैठा हूँ, बहुत बड़ा एरिया है, और लेकिन पंखे ऊपर लगे हैं, वो हवा नहीं दे रहे। पर ये जो है ये बाहर से हवा की चीज़ को हमें अच्छी बढ़िया पसीने से। अब मैं बंगाल में हूँ, यहाँ पे पसीना बहुत आता है। तो यहाँ पे मौसम तो ठीक है, लेकिन पसीने की वजह से थोड़ी गर्मी लगती है। देखिए पसीना, हमारे यहाँ खुला हवा है ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं बैठा हूँ। और ये फ़ैन चलाने के बाद थोड़ा राहत मिली। ये उन्होंने पुराना फ़ैन कहीं पे रखा हुआ था, डस्ट पार्टिकल कितना है। तो मैंने स्पेशली कहा कि मुझे तो टेबल फ़ैन चाहिए, ये बड़े फ़ैन से काम नहीं होता। तो हमारा फरमाइश पूरी हो गई, इसके लिए अब हमको पसीने से दूर रहना है। इसका भी बेनिफिट क्या है, एक तो ये हम जहाँ बैठे वहीं रख सकते हैं। फ़ैन तो ये तो आपको वहाँ बैठना पड़ेगा जहाँ फ़ैन है। अब मैं जहाँ मर्ज़ी वहाँ बैठ सकता हूँ। मैं बाहर के नज़ारे देखने के लिए मैं इधर साइड में बैठा हूँ। तो और साथ में पंखे की हवा भी आएगी। यहाँ हवा नॉर्मली ठीक चलती है, अभी थोड़ा ऐसा उमस जैसा हो रहा है और हवा भी रुकी हुई है थोड़ी। तो अब ये मैं इसको रोक दूंगा और अपनी तरफ रखूँगा, ताकि ज़्यादा ये दबाया का ये रहेगा, स्टेशनरी हो जाएगी। इसको अब ये हिलना बंद हो जाएगा। कोशिश करते हैं ये। अरे तो अलग अलग सिस्टम रहता है ये दबाने का। तो देखिए, 0 दबाने से क्या होता है, 0 दबाने से फ़ैन रुक जाता है, और 1 दबाने से 1 की स्पीड पे चलेगा। और 2 दबाया तो सेकंड स्पीड होगी। और 3 दबाया तो स्पीड बढ़ गई। तो बजाज का स्पेक्ट्रम फ़ोन है। अब इसका मुझे नॉर्मली इसको पीछे का जो है टर्न करने का, रोकने के लिए यहाँ रहता है, और कोई बटन तो मुझे दिख नहीं रहा। या तो ख़राब हो गया है, या इसको घुमाने से तो इसको इसमें एंगल दिया हुआ है, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। तो इसका मैनुअल पढ़ के आप तो करना चाहिए। और इसका भी एक और बेनिफिट क्या है, हाथों को सेफ रखता है। आपका हाथ अंदर फ़ैन में टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जालियाँ रहती है टेबल फ़ैन में। तो आपके पास सीलिंग फ़ैन भले कितनी ही हो, जो मज़ा और हवा टेबल फ़ैन देगा तो वो आप जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं। आपको पीठ में गर्मी लग रही है तो पीठ की साइड रख दिया, राइट साइड में गर्मी लगी तो राइट साइड में रख दिया। तो टेबल फ़ैन की बराबरी कोई भी फ़ैन नहीं कर सकता। ये अलग अलग साइज़ में आते हैं। बजाज कंपनी बहुत ही भारत की नामी कंपनी है। तो आप ये फ़ैन अगर पसंद हो तो बजाज कंपनी का मैं प्रेफर करता हूँ। बजाज बहुत सी चीज़ें आती है, गाड़ियाँ आती है बजाज की, 2 व्हीलर आता है। मेरे पास बजाज की मोटरसाइकिल थी। फिर ये लोग ट्यूबलाइट बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं, फैंस बनाते हैं। तो बजाज का करीब करीब इलेक्ट्रॉनिक पूरा मार्केट में हर चीज़ आती है। तो इनका वॉशिंग मशीन भी आती है। बजाज करीब करीब सभी फील्ड में है बजाज। तो एक रिलायबल कंपनी है भारत की। तो आप इसे EMI पे भी ख़रीद सकते हैं चाहें तो। बजाज कंपनी EMI भी प्रोवाइड करती है। तो अब यही बात मैं इंग्लिश में बोलूँगा, जो फ्रेंड्स हिंदी नहीं जानते। हेलो फ्रेंड्स, you can see this table fan. Despite having a large fan up on the roof, I need a table fan because it can be kept close to me and I can sit anywhere I want. Otherwise I have to sit below fan. I'm at a place in Bengal where there is too much humidity, so I need something to remove this sweat coming out
immediately after 2 seconds. So I asked my nephew to give me a fan so that I can use it and really get ready from the sweat coming. So because of too many rivers like Ganga river, and it is near to ocean, the here climate is quite humid. Despite having low temperature around 39 degree centigrade, we are getting too much sweat from our body, so we feel very sticky. So with this fan we can dry our sweat, and we can have to regularly drink water. So you can see this is Bajaj Spectrum fan. It has got 4 speeds, 0, 1, 2, 3, and it has got a button over here to stop scrolling. However, I tried to stop it because of some reason it will not stop. We have to see the manual, what is the procedure, and you can turn its angle up and down depending on where you want the air to come. You can see this curtain, how this is at full level, so you can see my hair moving. This is this curtain. So it looks like a windy weather. Otherwise there is no air today. It's so slow air that it feels like we are getting in a desert place. However, with this table fan we can enjoy sitting at our balcony or any place. So when summer is hot, Bajaj fan is a good option. So I suggest you to have this in your mind. Despite having ceiling fans, table fan are something you cannot replace, because you can put them anywhere and you can adjust the height, angle, everything. So you are not dependent on where the fan is. Fan is dependent on where you want it to be placed. But make sure a few things, that it is not, you do not use it in rainy season where rain drops may damage the table fan. So this has to be, and if you have to take care of it, that it do not get damaged. You should not place the wiring near wet place like near bathroom or near rainy place. If there is rain, you should keep it inside. If you keep it outside and then rain comes, you will damage it very fast. These Bajaj fans usually come with few years warranty also. So you can watch my previous video. I made a video on one small smart portable fan that was around 10 inches long. That was also very good, but that was having a power bank also. So that can be used 4 hours without power. However, there is no power bank in this fan, so you have to connect directly to the main switch. So this is one drawback of this large fan, but the quantity of air is high, so many people can sit in a hall and enjoy the good air coming through it. So thank you very much. I hope this fan review may help you buy this fan, and it can be purchased in Bajaj EMI also. Bajaj is a reliable company. It produces many electronic items and even bulbs, tube lights, and air conditioner. Bajaj vehicles, you already know there are lots of Bajaj vehicles like City 100, but Splendor and many more. So it is a reliable company, so you can trust this company, Bajaj company from India, and buy a good fan as per your choice. Thank you very much. Watch my previous videos and on health and technology. So for that you should subscribe my channel and press the bell icon also, so that you get message when I produce new video. So I usually create videos on technology, health, to make your life happier. Thank you very much. I hope this video is of some help to some people. Thank you very much.